बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो क्रिकेट के हवाले से खासी निगाह रखते हैं और जो आप समझते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान का वाहिद खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट करता है। एक जीत से पर सारे लोग खुश होते हैं, जबकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तानी टीम नाकाम हो जाए तो सब के जो चेहरे हैं वो ज़रा अफसरदा हो जाते हैं। इसी पर बात करते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा मेन इशू हमारा है कि कोविड-19 में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का टूर करने जा रही है। वसीम भाई, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि कोविड-19 में पाकिस्तान टीम को वहाँ पर माहौल वहाँ पर भेजना? लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों की जो हिफाजत है उसको खास अगर मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, जिस तरह के बाइस स्कोर माहौल की बातें हो रही हैं, तो उससे कुछ नुकसानात का भी अंदेशा हो सकता है। हाँ, देखिए वो इंग्लैंड में ये भी थ्रेट लेवल जो है जो कोविड की है, तो उस उनने डाउनग्रेड कर दिया टू नंबर 3 लेवल। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज के इंग्लैंड में हालात बहुत ख़राब थे पहले, बट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड मैसिवली। सो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव टू गेट क्रिकेट बैक ऑन अगेन। लोग कह रहे हैं कि आपके लिए, मीडिया के भी लिए, फॉर ऑल ऑफ आवर फैंस, वी नीड टू गेट क्रिकेट बैक ऑन अगेन। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट for world cricket, that cricket is played again. वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी इंग्लैंड में वो खेल रहे हैं और उसके बाद हमारा टूर भी है। सो आई थिंक फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट क्रिकेट अप एंड रनिंग अगेन, वी स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट अगेन, and we make sure that everything is safe for the players. We will not put the health of the players in any danger whatsoever, but we've worked very closely with ECB, looking at all the provisions they have in place, and we are confident that they can have a safe tour and we can get cricket back on again. 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो इंग्लैंड उस टीम का शामिल था, मुल्क जिसने पाकिस्तान आने से इनकार किया। अब हम अपने इस माहौल में टीम को वहाँ भेजकर क्या दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट क्रिकेट बैक अप अगेन। टीम्स डिडंट कम टू पाकिस्तान बिकॉज दे हैव देयर रीजंस। वो जो 2009 में जो श्रीलंका की टीम के ख़िलाफ़ हुआ था, it was a very, very bad moment for Pakistan cricket. And so you have to build confidence. It takes time to do that. But I think that the fact that we brought Sri Lanka back, Bangladesh, MCC team के भी आए खेलने के लिए, West Indies team भी पहले खेले हैं. We've had various teams, West Indies women's teams, under-16s teams, but to get the international teams back again has been very, very important for us. And to get Test cricket back to Pakistan after 10 years, I think has been crucial for all of our fans and all of our stakeholders in Pakistan. आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, तो वहाँ की कंडीशन कैसे देखते हैं पाकिस्तान टीम के लिए? और माजी के जो 2 टूर्स हैं उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस तो कुछ बेहतर रही थी। अब इस तरह के माहौल में जब कुछ लाज भी चेंज हो गए हैं और इंग्लैंड की एडवांटेज भी होगा कि उसने पहले वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेल चुकी होगी, तो उस सूरत में किसको देखते हैं कि एडवांटेज पाकिस्तानी टीम को कितना होगा? और पाकिस्तान टीम का वो कौन सा शोबा है जो आप समझते हैं कि हमारा ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इंग्लैंड के? देखिए, with the likes of Yunus Khan, Mushtaq Ahmad, these guys have played a lot of cricket in England, Waqar Yunus, so वो conditions को understand करते हैं। So that's going to be a big advantage for us. Azhar Ali, Asad Shafiq, ये जैसे players हैं हमारे, they've played in England before on a number of occasions. Safraz हो गया, बाकी players भी हैं। So there's enough experience to get the players to understand conditions क्या होंगे। West Indies का series भी players भी वो देखेंगे, so they'll be able to see with the ball swinging using the Duke's ball, how it's different to the Kookaburra ball. तो ये चीज़ें जो हैं experience के लिए, we have got enough experience around the team. The wickets will vary. If we play in Manchester, the wicket is normally very good there. It has a little bit of pace. If you play in Southampton, it's normally quite a flat wicket. It turns a little bit in Southampton. So the conditions in England, you've got experienced players. So when we made the decision about Yunus and we made the decision about Mushtaq, it was based on the fact that, do these guys understand English conditions? Yes, they have vast experience. So strategically we thought it through with Waqar, with Misbah. So we've got a good support staff that can provide a lot of information and a lot of knowledge to some of these younger players and some of the more experienced players about the conditions we're going to find in England. आपने यूनुस की बात की, तो यूनुस तो खासा जो उनका जो PCB के साथ तजर्बा माजी में रहा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। उनको ऑफर्स भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शराइत के तहत आने की कोशिश की, जिसको PCB ने उनको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। तो आप किस तरह उनको देखते हैं कि आपने उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई, वो किस हद तक समझते हैं कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए,
हमारे नौजवान बैट्समैनों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और ख़ुसूसन एक सवाल ये भी किया जाता है कि यूनुस का जो मिजाज है वो थोड़ा गर्म है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़ाहरा हो सकते हैं। देखिए, विद एनी प्ले एनी ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले होनी चाहिए। तो यूनुस से जब हमने बात की थी, देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑन बोथ साइड्स। देखिए, वो जब अंडर 19s की हमने बात की थी यूनुस के साथ, सम थिंग्स वर्क सम थिंग्स डोंट। सो हम नेगोशिएशंस कर रहे थे, लेकिन कोई इशू नहीं था। देयर वाज नो इशू अबाउट यूनुस फॉलिंग आउट और PCB फॉलिंग आउट विद यूनुस। तो जब मैंने यूनुस को फ़ोन किया था टू गेट इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन सेशन, सो हम ऑनलाइन सेशंस किए थे प्लेयर्स के लिए, तो यूनुस कह रहे थे बिल्कुल मैं खिदमत करूँगा प्लेयर्स के लिए, ऐसे मैं मुल्क के लिए मैं इधर हूँ, काम करूँगा, ज़रूर मैं काम करूँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। एंड सो व्हेन आई स्पोक टू यूनुस, देयर वाज नो इश्यूज़, एंड द फैक्ट दैट यूनुस इज़ अग्रीड टू कम बैक आई थिंक प्रूव। सो लॉट्स ऑफ सस्पिशन होती है और मीडिया हाइप भी होता है, सेंसेशनलिज्म भी होती है, लेकिन देयर इज़ बीन नो इश्यूज़। इफ़ देयर बीन एन इशू वी वुडंट हैव आस्क्ड यूनुस इन द फर्स्ट प्लेस एंड यूनुस वुडंट हैव अग्रीड। अभी आप लोगों ने अनाउंस किया कि जो यूनुस खान होंगे वो सिर्फ इंग्लैंड टूर के लिए उनकी खिदमत हासिल की गई हैं, तो उसके बाद क्या कोई प्लानिंग है जहन में उनको कंटिन्यू करने की, या सिर्फ एक ही टूर के लिए उनकी खिदमत होंगी? नहीं, पहले तो हम बस इंग्लैंड की टूर हम सोच रहे हैं। लेट्स गेट द इंग्लैंड टूर डन एंड देन विल हैव टू सिट डाउन विद यूनुस, सी व्हाट यूनुस वांट्स टू डू, एंड यू नो देयर इज़ no issue about Younus being involved moving forward. Younus is a legend for Pakistan cricket. He's a good human being, he's a passionate human being, he's a patriotic human being. They're the sort of people we need to get involved. And he scored over 10,000 runs. He's been one of the finest players in the history of the game in Pakistan. So, wo jo knowledge or experience hota hai, the know-how, you can't ignore that. Younus has scored runs all over the world. So, England tour ke baad hum baithenge Younus ke saath. We'll see what Younus wants to do, and hopefully we can start to agree things in terms of moving forward. यूनुस खान, मिसबाउल हक, वकार यूनुस तीनों ही बड़े नाम है, उसके साथ सकलैन मुश्ताक अहमद भी हैं। तो क्या नहीं समझते कितने सारे बड़े जो बिग्स हैं आप उनको इकट्ठा किया है, इससे जहाँ फ़ायदा होगा हमारी टीम को, उससे कुछ इनके जो ईगो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। देखिए, इश्यूज़ तो हर वक्त हो सकते हैं, लेकिन हर मुल्क में यही इश्यूज़ होते हैं कि यू गॉट वेरी experienced cricketers, single-minded cricketers. In order to be successful at international cricket, these guys have had to be single-minded. So they will have opinions, and unka opinion hoga. But I think understanding and working together as a team is very important. I have no doubt. Like Misbah Younus ka relationship bhi hai. वो पहले खेले भी हैं. They've worked together. Waqar has worked with them. Mushi's been involved as well as his assistant coach. So हम सोच समझ कर ये decision बनाई थी. But everybody is clear about their roles and responsibilities when they go over to England. आप पहले मिसबाउल हक को लेके, उसके बाद यूनुस खान को लेके आ गए, तो क्या नहीं समझते कि ये मिसबाउल हक से जो आप लोगों ने तवक्कुआत एक वो बस्ता की थी, ये उसका एक ये कह सकते हैं कि नाकामी है यूनुस मिसबाउल हक की, कि वो अच्छा डिलीवर कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आपको बैटिंग कोच के तौर पर यूनुस खान को लाना पड़ा? देखिए, लोग कहते हैं, अगेन इट्स अ लॉट ऑफ मीडिया हाइप। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जब ट्रेवर बेलिस जब वो इंग्लैंड का हेड कोच था, ही हैड मार्क रामप्रकाश, ही हैड ग्राहम थोर्प एज हिज बैटिंग कोचेस। खुद वो बैट्समैन था न्यू साउथ वेल्स के लिए। तो फिर उसके बाद लास्ट ईयर भी जस्टिन लैंगर, जब वो इंग्लैंड गए थे, ग्राहम हिक उसका बैटिंग कोच था, खुद वो जस्टिन लैंगर बैट्समैन था। रिकी पॉन्टिंग भी, स्टीव वॉर उनके साथ है। हर मुल्क में आप देखते हैं ये एक टीम होती है, सपोर्ट स्टाफ। सो यू ऑलवेज हैव अ बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच एंड अ बॉलिंग कोच। तो उसके बाद ये हेड कोच होता है। हेड कोच का ये काम नहीं होता कि आप हैंड्स ऑन हर वक्त आप कोचिंग करें। ये मेंटल साइड को प्रिपेयर करते हैं, सिलेक्शन, मेकिंग श्योर एवरीबॉडी इज ऑपरेटिंग, टीम स्पिरिट, डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेड कोच। ऐसा क्यों नज़र आता है कि माजी में भी ज़ाहिर इसका चीज़ें सामने आती रही हैं कि क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ यस मैनों की ज़रूरत होती है, जो आगे से बोले ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव का है या जो चेयरमैन का है उसी पर साइन करें और अपनी सैलरी लें? देखिए, वकार यूनुस यस मैन है, यूनुस खान यस मैन है, तो ये देखना पड़ता है कि आपको कि ये देखें यस मैन तो पहले होते थे। जो डिसीजंस हम बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, एंड आई डोंट केयर इफ़ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। द बॉटम लाइन इज़ यू हैव टू मैनेज पीपल, एंड इफ़ यू डोंट मैनेज पीपल देन यू हैव इश्यूज़। बट फॉर अस, फॉर मी, आई बैक माई सेल्फ टू मैनेज पीपल, and the regime and the people that we're creating, the structure that we're creating with Saklain and these sorts of people coming into our system now, is that it doesn't matter
whether these people are opinionated or they've got strong opinions about something. Leadership is about management, and you have to get the best out of people, and you also need to understand where their triggers are, where are the things that are coming, how do we deal with those things so they don't become any issues. So by Yousaf Khan, these sorts of people coming in, it shows we're not agreeing to yes men. We want people to come in. Wasim Akram is opinionated, he will have his views. You know, he's a legend of the game. So all of these views, maybe in the past there's been yes men, as I've said to you, people have been appointed in positions that didn't deserve to be in positions and had no idea about cricket or anything else, but yet they were holding very influential positions within the PCB. एक तरफ आप लोग PCB में डाउन साइजिंग की बात करते हैं, दूसरी जानब आपने उससे ज़्यादा सैलरीज़ पे लोगों को लाके बिठा देते हैं। यहाँ पर जैसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमने देखा कि अभी लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो रही, कब शुरू होगी इसका किसी को अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो जो हाई सैलरी पे पीपल हैं वो अभी से काम करना उन्होंने शुरू, उनका जो मीटर है वो चलना शुरू हो गया। तो बेहतर नहीं था कि थोड़ा वेट कर लिया जाता, जब क्रिकेट की हमारी बाकायदा उसकी शुरू होती तो उस वक्त लोगों को उनकी जो जॉब है वो शुरू होती। देखिए क्रिकेट का मीटर तो चलना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू कैरी ऑन, प्लानिंग करना पड़ता है, वी नीड टू पुट अ स्ट्रैटेजी टुगेदर. सो cricket doesn't stop because of COVID. COVID and cricket need to coexist. And हम यही कह रहे हैं कि we need to plan, we need to be ready. जो आप कह रहे हैं हाई सैलरीज़ की आप बात कर रहे हैं, देखिए मुदस्सर नज़र, हारून रशीद, आगा जाहिद, अली ज़िया, सुभान अहमद, ये जो लोग थे पहले काम करते थे PCB में. We've moved on in a different direction. The salaries that we are paying these people, these new players coming in, is less than what we were paying previously. So ये भी एक misconception है कि हम salary को हम बढ़ा रहे हैं, we're increasing salaries. We've planned very meticulously. Contingency planning भी हमने भी की है around worst case scenarios, no World Cup, no Asia Cup. तो फिर finances क्या होगा हमारे finances को? तो we have planned all of these things. This year there's going to be no salary rises for the senior staff. Only people who earn 100,000 rupees or less will get salary rises. वो जिनको चाहिए, they will be rewarded and their salaries will increase. Everybody else, there'll be a freeze in the salaries. So I think again it's a misconception. You need to run a cricket board. But लेकिन एक सवाल है, we inherited a cricket board with 700 people. जो लोग बैठते हैं ना तो बातें करते हैं about people talk about 700 people, ये लोग काम कर रहे हैं, इनको पैसे ये मिल रहे हैं. ये सवाल पूछे, how did we get to a situation when we got to in 2019 where we had 700 people working for the PCB? Answer that question. दुनिया के दीगर अगर बोर्ड्स की बात करें तो वो अपनी सैलरीज को कट डाउन कर रहे हैं कि हमारे लिए जो मसाइल हैं आने वाले वो ज़रा अच्छे नहीं हालात नज़र आ रहे. क्या PCB के पास इतना अहसासा है कि आने वाले 2-3 सालों में अगर क्रिकेट के मामला अच्छे नहीं हो पाते, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो क्या PCB सर्वाइव कर सकता है इस तमाम हालात में? डेफिनेटली. देखिए हमने 3 साल का हमने कंटिजेंसी प्लानिंग भी की है. So looking at cash flows, looking at how we run the business for 3 years. So we have planned accordingly for 3 years. Some cricket boards are in a very, very bad state. Alhamdulillah, Pakistan is in a decent position, but we have to manage our finances now to ensure there's no issues further down the line. So हमने worst case scenario planning भी हमने की है, looking at what ifs, and these are the sort of things as leaders, and particularly with someone like Ihsan Mani Saab, who is also the chair of one of the most strongest committees at the ICC, the Finance and Commercial and Audit Committee. A former chairman, a chartered accountant. So, Ihsan Saab is always, and myself are always looking at the finances of the organization, making sure that we do not put any issues, any problems on the business. And I think that for the next 3 years, our financial planning is already being done. We know where we're going, we know what we need to do. But we have cut back massively on the things that we don't need to spend money on. So only the critical things that we're going to spend money on. So women's cricket, domestic cricket, our international cricketers, these things we're not going to compromise on. But we will cut costs in other areas to make sure the money is going in the right places. अब थोड़ी सी कप्तानी की बात कर लें. बाबर आजम पाकिस्तान टीम के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस वक्त कह सकते हैं कि हमारे रन गेटर हैं, तो आपने उनको कप्तान बना दिया, तो इससे ज़ाहिर उनकी बैटिंग सलाहियतें भी तो मुतासर हो सकती हैं. देखिए अभी तो नहीं हुई. So, some of the best captains are also Graham Smith. He was 23 years old when he took over the captaincy. Look at his record. So I think before you make a decision on giving people the captaincy, you have to understand their DNA, what type of individuals they are.
Can they handle the pressure? Can they take the pressure? Is it going to affect their game? That they're going to be so absorbed into making sure everyone else is happy and comfortable that they don't actually deliver themselves. But the first year, I would say so far, I think that Babar has proved that the decision was right. He is our future captain across all three formats. He is our future. What we have to develop is 11 leaders. And this is what Pakistan, we haven't done for a very long time. We've relied on one or two people as leaders. But ultimately, you know, we've got a great group of young players and experienced players now, passionate about Pakistan cricket. So, you know, it hurts them when fans and others say they're not trying or they haven't done, they can win or lose. The important thing is, are they giving 100%? And that's what fans should judge on. And, you know, I've been here now 16 months. We've made some tough decisions. If I didn't think that players didn't care about Pakistan, they wouldn't be involved in the system. But the players we now have are passionate about taking Pakistan cricket forward. And inshallah, with the team they've got around them now, we'll see more success moving forward. अब PSL की बात कर लेते हैं। बाज़ार अगर ऑन स्क्रीन देखा जाए तो PSL के जो फ्रेंचाइज मालकान हैं और PCB के हुकाम में एक बड़े अच्छे मूड में नज़र आते हैं, बड़े अच्छे गपशप भी लगा रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन उनके कुछ तनाज़ात हमेशा ख़बरों में आते रहते हैं। क्या वजह कि अभी तक PCB उनको मुतमन नहीं कर पाए? वो समझते हैं कि जैसे PCB उनके पैसे खा रहा है, हालांकि PSL पाकिस्तान में भी, लेकिन अखराजात अगर आपने शो करवाए वो उनसे ज़्यादा करवाए पिछले माजी की निस्बत। देखिए, पहली चीज़ ये है कि we brought the HBL PSL back to Pakistan, to the fans. And I said right from the beginning, and I make no bones about it, the fans are our most important stakeholders in the game. The 6 franchises have invested a lot of money in Pakistan cricket. They've done an incredible job. They've been partners of the PCB now for 6 years. It's a partnership. It's not a sponsorship, it's not a franchise owner, it's a partnership. Partnership की ये बात होती है, whether it's a marriage, whatever it is, it's two people, two entities working together. So for us, the franchises, they're not going to agree with everything. तो इसमें बुराई क्या है इसमें? You know, that you will have arguments, you know, Yousaf Sahab, I'm sure you don't argue with your wife, but, you know, happens sometimes. But, you know, you don't agree with everything. So it's part and parcel of life that you're not going to agree with it. But it doesn't mean that there's issues and there's, you know, there's fallouts or whatever. We will debate, we will discuss in a heated way. They have their vested interests, we have ours. But ultimately, we're all coming together for Pakistan cricket. Bringing 30 matches back to Pakistan was a huge thing. And, you know, moving forward, having it across more venues is what the franchise owners want and what we want. देखते हैं कि इस साल 4 मैचेस हमारे रहते हैं PSL के। T20 वर्ल्ड कप भी ज़ाहिर अभी तक उसका कंफर्म नहीं हुआ, होना नहीं होना, IPL भी होने जा रही है, अगर वो नहीं होता तो हमारा इस विंडो हमारे पास है कि हम वो जो PSL के जो 4 मैचेस बाकी हैं इस साल करा पाएँ। देखिए, हम पूरा प्लान हम कर रहे हैं टू प्ले देम इन नवंबर। 4 मैचेस जो क्लोजर होना चाहिए। The franchises, 1 or 2 had differing views, but I think the majority were happy to go with finishing the matches off. It's important you have closure. We've got a window in November to play that. So we're, you know, COVID dependent. We are absolutely planning, our plans are to make sure that we finish those final 4 matches. अभी जिस तरह के हालात हैं इसमें नज़र नहीं आ रहा कि मुमकिन हो पाएगा कि T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में हो पाए, और सुनने में यही आ रहा है कि प्लानिंग की जा रही कि इसको फरवरी और मार्च में कर दिया जाए। अगर ये अनाउंसमेंट होती है ICC की जानब से तो इससे हमारा जो PSL का 6th सीज़न है वो तो डिस्टर्ब होगा काफ़ी। किस तरह मुमकिन कर पाएंगे उसको? देखिए, अभी ये भी hypotheticals लोग बोल रहे हैं। There's no substance behind it. There's no, you know, I've sat in ICC meetings as the chairman has, and certainly one of the things that's been discussed is around postponing the World Cup but moving it to October or November next year. So that's one of the options that is looked at, which is probably the firmer option that everybody is now looking at. So look, as far as the speculation goes, we've certainly not heard anything about February or March in terms of playing the World Cup there. जिस तरह आजकल क्रिकेट सीरीज़ को मुमकिन बनाया जा रहा है बायोस्क्योर माहौल में, क्या ये पॉसिबल है कि हम बायोस्क्योर माहौल में PCB इस काबिल है कि एशिया कप भी करवा सकें? देखिए, एशिया कप तो there's going to be 2 options for Asia Cup. या हम UAE में खेलेंगे या श्रीलंका में खेलेंगे. Sri the situation now I think is down to about 150 cases. So उन्होंने कंट्रोल कर दिया इसको. And as I've said before, it's about being able to move teams around safely. It's making sure that there isn't a wider pandemic within that country.
that's going to create potential problems when you start to interact with people. We believe that Sri Lanka were due to play have the Asia Cup in 2022. So what we felt was that if we are not in a position to host this year, that as well as the UAE, the other option would be Sri Lanka. And then we would have their Asia Cup in 2022. Because are we going to be in a position to host in Pakistan in September? No. Are teams going to be comfortable coming in September? No. We're already seeing now there's going to be a spike in July. So that's a month and a half after that. If your teams, you're not feeling confident. So it's best to make early decisions, but there is a compromise that if it goes to Sri Lanka, we will then have their Asia Cup in 2022. वसीम, एक जो सबसे बड़ा इशू नज़र आता है पाकिस्तान की क्रिकेट में वो है फिक्सिंग का। क्रिकेट करप्शन के हवाले से ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीसीबी अभी तक वो इक़दाम नहीं कर पाया जिससे ये आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इस हवाले से बदनाम ना हो और पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान ना पहुँचे। तो क्या उसके हवाले से क्या आप लोगों की प्लानिंग है? देखिए, in the last 2 or 3 months, we've actually put something together which the chairman has shared with the Prime Minister, which is around criminalising corruption within cricket, match fixing, all of those areas. We're looking for a legislation to be passed which basically sets out in terms of criminalising match fixing, corruption, all of those aspects. We've seen in Sri Lanka recently. They have now criminalised it. So anybody who's found guilty, they can face imprisonment, investigations, etc. So we've taken parts of what they do, we've taken what other countries do, and our legal team have developed something that works for Pakistan, but that's been taken forward, and we're hoping that, again, why wasn't it done before? With the issues we've had in 2010, other issues that we've had in the past, why has this never been done by previous PCB regimes? There's a very simple way of dealing with it. Make it a deterrent. Once people know there's a clear jail sentence in place for you, with a clear ban for life, people will think twice about doing it. Until we do that, there's always going to be the threat of that. But we're confident that in the coming months, that'll come through, and that'll be a huge, huge step forward for Pakistan cricket and for its integrity and keeping the game clean. वसीम, जो भी फैसले किए जाते हैं यकीनन अच्छे के लिए किए जाते हैं। अब तक आप कोई ऐसा फैसला जिस पे समझते हैं कि पीसीबी का वो बैकफायर हुआ और आप समझते हैं कि हाँ ये हमारा फैसला गलत था, खुले दिल से एतराफ़ करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, about 3 weeks ago made a decision about releasing about 55 staff, lower level staff. That was my decision, but I realized very quickly I'd made the wrong decision because of COVID, lower level staff, and I think any good leader will own up to his mistakes. I made a mistake, but we changed it very quickly. Within 24 hours, we reversed the decision. There was no harm done. Anybody who doesn't make decisions is lying, and doesn't make mistakes is lying to you. So the issue you have is when you're in a position like mine, you have no margin. Everything is scrutinized. You have to get every decision right. Did I get that decision right? No. Did we reverse it and then get that decision right? Yes. So there's a big learning in it for me that, think things through sometimes better. And situations like that, we need to think better and think of the situation of what's going on. But, ultimately, Yousaf Saab, I go back to the same thing. We have 700 staff. 700 staff. We're not an employment bureau. We have to, at some stage, start addressing that. At the top level and the bottom level. We can't sustain the amount that we pay on a monthly basis to everything. There'll be maybe no World Cup, it's going to be a tough time for world cricket in the next 3 years. And at some stage, the PCB has to address it. I think it's been negligent. I use the word negligent, that the PCB has found itself in a situation now where 700 employees are on the payroll from the past regime. That's what we have inherited. We have inherited that. So actually, when people are having intelligent debate, one of the discussions that people should be talking about is that why have we found ourselves in this situation as the PCB? But at some stage, we're going to have to downsize. We have to do it if we want cricket to continue here in Pakistan, and we want to invest in the right areas to make our international teams the most successful teams in the world.
वसीम, आखिर में जाते जाते ये बता दें कि जो भी ज़ाहरा क्रिकेट बोर्ड में आता है, एक ना एक दिन उससे जाना होता है। एज ए पाकिस्तानी आप कहाँ अपनी जो क्रिकेट की जिम्मेदारियों उनको छोड़ना चाहेंगे, या यूँ कहने का आपका टारगेट क्या होगा जब आप यहाँ से जाएँ, जब भी जाएँ तो आप मुतमन हो कि यार मैंने ये पाकिस्तान के लिए ये किया है, मैं अब मुतमन हूँ? वो क्या ड्रीम है आपका? The dream is to leave a structure and a system in place that provides long-term success for Pakistan. You know, I'm not here just to have a success next month or 2 months or 3 months. The changes that we are making, if you look carefully, are strategic, and it's doing it for the long-term success of Pakistan cricket, to make it sustainable. So people will judge my time. The department cricket is one area that a lot of people talk about, but people forget that, you know, ultimately, you know, the patron has a view. We have to implement that view. So, you know, our job is to deliver what needs to be done, and that's what we did. And I think that people forget that when they start to place the blame firmly at my feet around what's happened to the employment of departmental cricketers. There were a lot of departmental cricketers in the late 30s involved. My question is, what value were they bringing to Pakistan cricket? Are they taking Pakistan cricket forward? So if they're good enough, they're going to be part of the 194 domestic contracts we're going to offer. If they don't, it means they're not good enough. So difficulty Pakistan mein ye hai ki because of the other side of society, which is it's a tough environment, poverty, difficulties in terms of earning money. You know, you come in with a mindset to make decisions for cricket reasons, but you have to find the balance. And this is why we're awarding enhanced contracts for domestic cricketers. We want our very best 194 cricketers in the country to be earning more money, better money, so they can do that. The city cricket associations will be set up. There's opportunities for people who used to be part of departments to still play and work their way up into cricket associations, then earn a domestic contract. So I just want long-term success, Yousaf Saab, and I want people to judge it. It's not my job to judge that. But all I will say is, you know, when people judge, I want them to do a comparative study of what took place 3 years prior to this regime coming in and what was delivered during the number of years that this regime was in place. And I'm pretty confident that when you start to look at it that way, we've started to deliver, and delivery is what it's about, not talking, it's about getting things done. And what we've done and evidence in the last 16 months is we get things done. थैंक यू वसीम। आपने बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनकी ज़रूरत थी लोगों को जानने की कि किस तरह पीसीबी के मामला चल रहे हैं। ये थे वसीम खान, जिनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए यहाँ पर आए हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सका वो पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ ऊपर तक ले जाएंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।